एक दर्दनाक घटना में अपने बेटे और अपनी नाती को खो चुके गौपुर के एक पिता चिदानंद सैकिया ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नाम पर सरकारी चिकित्सक के पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस और स्वीपर के नाम पर भी उन्हें 25,000 रुपए देने पड़े। यह घटना 7 नवंबर की है, जब चिदानंद सैकिया के बेटे मृगांक सैकिया ने पहले अपने 7 साल के बेटे की हत्या की और उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया था। अपने बेटे मृगांक और अपने नाती को खोकर पहले ही गम में डूबे पिता को तब और मुश्किलें हुई जब सरकारी अस्पताल के चिकित्सक ने उनके सामने पैसों की मांग रख दी। चिदानंद सैकिया ने इस आरोप और मुख्यमंत्री से मामले में हस्तक्षेप की अपील के बाद विश्वनाथ थाने के पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। विश्वनाथ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। মোৰ ভাষা নাই, কাৰণ 7 নৱেম্বৰত এইটো এটা দুৰ্ঘটনা হয় আৰু 8 নৱেম্বৰ দিনা পুৱা যেতিয়া গোটেই মোৰ ল'ৰাৰ মানে ডেড বডি যেতিয়া হেংিং অৱস্থাত পায়, এখনকৈ এম্বুলেন্সত দুটা, কাৰণ মোৰ নাতি আৰু ল'ৰা সেই মুহূৰ্তত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে বিহালীলৈ নিবলগীয়া অৱস্থা হয়। তাৰ কাৰণে সেই ডেড বডি দুটা থানাত ৰখাৰ পাছত মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহ ঘৰলৈ ঘূৰি আহে যে টকা লাগে, 25,000 টকা লাগিব। দুখন এম্বুলেন্সৰ কাৰণে 7,000কৈ, প্ৰতিখন এম্বুলেন্সৰ 7,000 14,000 আৰু তাত ডক্টৰৰ বোলে ফিজ মইতো নাজানো, গতিকে ডক্টৰৰ ফিজ লাগে প্ৰতিটো বডিৰ কাৰণে 3,000 আৰু চুইপাৰ এজন থাকে বোলে কিবাৰ কাৰণে তেওঁলোকক 2,000কৈ। 25,000 টকা এটা মোৰ নিজৰ জোঁৱাই হাতত দিছোঁ আৰু তেওঁলোকে এইটো কাম কৰি আনিছে। মোৰ 25 লাখ টকীয়া এটা সম্পত্তি ধ্বংস হৈছে, তাৰ বিনিময়ত 25,000 টকাটো মোৰ আচলতে উদ্দেশ্য নহয় যে জনসাধাৰণৰ আগত এইখিনি অৱগত কৰিম, কিন্তু মই এটাই আচৰিত হৈছোঁ, কোনোবা যদি আৰু কোনোবা দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ মাজলৈ যায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ যদি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলৰ হয়, তেওঁলোকৰ মাজৰ পৰা 25,000 বা 20,000 লাগে 10,000 টকাটো উলিয়াই দিয়া মষ্ট বুলি সম্ভৱ নহয়। সেইটো বোধগম্য হৈ পেলাই মই আচলতে অসমবাসীক মই এইটো জনাব বিচাৰিম।